नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। हिंदुस्तान के हर एक कोने में करी एक लंबे अरसे से बनती आ रही है। We were the inventors of the curry, K-A-R-I. That became C-U-R-R-Y. The British took it from the Indian word kadhi. अंग्रेजों ने एक पूरे हिंदुस्तान के खाने को एक शब्द में समा दिया। Let's go and have curry. That's not it. The first curry made in Indian subcontinent was 4,000 years ago. In Sangam era, we had our curries and it has traveled so many thousands of years. ये जो रेसिपी है ऑलमोस्ट 600 इयर्स ओल्ड रेसिपी है। ये मेंशन किया गया है सुपर शास्त्रा में। इंडियन फूड कल्चर बहुत पुराना है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए कौन सी डिश कब बनी थी ये हमें मालूम नहीं होता है। हुआ यूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को स्पाइसी इंडियन करी से इश्क हो गया। इंग्लैंड वापस गए, करी नहीं मिली और तभी जन्म हुआ इंडियन मद्रास करी पाउडर का। Curry is a slow simmered, layered, complex dish that's built with many ingredients that come together in your cooking pot. लगभग 15 लाख लिखित अनलिखित रेसिपीज ऐसी हैं जिनमें कि एक रस है, एक ग्रेवी। एक ही मसाला, एक ही मिश्रण सब करियों के लिए कभी भी काफी नहीं हो सकता है। So together, let's celebrate the world of curries of India. Being in Chennai is always an exciting journey for me. I just love the way an average Chennaiker is passionate about what they believe in. Fiercely loyal, they guard on to their culinary traditions with a warlike zeal. This is reflected in their lifestyle and their food. It was indeed difficult to narrow down onto one curry from Tamil Nadu. But being a North Indian, the one recollection that always comes to my mind was that of sambar. Or should I say sambar? So I sourced out culinary enthusiast and food researcher Shri Bala to take me on the historical journey of the sambar. And sure enough, like a true Chennaiker, she was as passionate in her defense of the sambar. ये क्या है जी? Vibhuti. And you should put it only with this finger. Okay. And this is from the temple. Lovely. On that enlightening note, मुझे आपसे पूछना है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी करी है that is, if I can call it a curry, सांबार. And I am so sure about this कि ये साउथ ऑफ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है. Across India, everybody loves one or the other form of sambar. So, how did this sambar actually start? In Sangam era, we were not calling this as sambar. अच्छा, इसका नाम सांबार ही नहीं था. सांबार ही नहीं था. उसको मधुरा कलवई बोलते थे. Go slow. मधुरा कलवई. Madura is nectar. Nectar. Kalava is mixture. Collection Of nectar. Yeah. So it's कितनी all पोइट्री वाला इसका नाम है ना? Sangam is full of poetry. Sangam is from 300 BC. So what was written there is Madhura Kalavai. The word Madhura Kalavai. Actually, there are relationship between a lover and the girl. Okay. So when he is going to come back from the war, she is preparing this and keeping for him. So- it is in the poem. So Sangam era is so fascinating because the entire life of a person, right from the way they were living to the way the kings were, everything is documented. संगम जो लिटरेचर है, टेक्स्ट है, उसके अंदर क्या कोई सांबार की रेसिपी है? रेसिपीज तो नहीं है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है उसमें. लिखे हुए हैं. मैंने जो सुना है कि जो पहली दफा सांबार बना था वो मूंग दाल से बना था एंड धीरे धीरे वो तूर दाल पे लोगों ने अडैप्ट कर लिया. It's true. True. In Sangam era, when you go into research of that particular era, you will only get what are all the ingredients available in that era. There is no mention of tur dal.
Whereas mocha, mocha is your kind of a wal dal, you can call it, something similar to Butter that. beans. Butter beans. Yeah. So everything you'll have a word about mocha. ओके, तो सबसे पहले सांबार के अंदर क्या जाएगा? Moong dal ka pani. मूंग दाल का पानी। Pani. Only the rasa has to go in it, and all the vegetables. इसके अंदर है yam, Yam ashcode, raw banana, और cluster bean, cluster bean, broad beans है. sweet potato भी है, बैंगन नहीं है। बैंगन तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते थे उस समय. ड्रम स्टिक, बैंगन तो बिल्कुल नहीं. तो ये बहुत ही recent changes हैं। Yes, absolutely. Alright, ये ये हो अच्छे से गया। उबल गया है, almost half done। Yes, इसको रखते हैं. अभी मसाला बनाते हैं. थोड़ा तेल. अच्छा, एक्चुअली हम जिंजली ऑयल यूज करते हैं. ये पहले भी जिंजली ऑयल जिंजली ऑयल ही यूज करते थे. वो भी पोएम में आता है. पहले काली मिर्च, काली मिर्च. कितना पेपर डालना है? मिर्च तो इसी से आता है. तो सूखी लाल मिर्च नहीं जाएगी? नहीं नहीं. मेलग। मिलग. देखा, मुझे कुछ कुछ तो आती है। Yeah. इसमें चना दाल एंड देन धनिया. धनिया। थोड़ा हींग. हम तो अभी भी पाउडर हींग नहीं इस्तेमाल इस्तेमाल करते. करते हो, थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है Yes. पाउडर वाली। We'll have to add the coconut. हम तो ऑयल में फ्राई नहीं करते हैं इसको. अच्छा, इसका दरदरा पेस्ट अभी करना है. जो अभी हम पीसने जा रहे हैं, टेक्निकली ये सांबर मसाला है। सांबार मसाले ये, लेकिन बिना रेड चिलीज. So how different is this sambar masala from the sambar masala that we would make today in a Tamilian Brahmin family? Tamilian Brahmin family, except the pepper, only you'll be replacing it with red chili. Okay. Whereas if you go to Udupi, the Udupi sambar will be different, which will have little tur dal, rice, and methi dana. I think it's done. All right. तो ये हमारा सांबार मसाला तैयार। वो जो मोचा मैं बोल रही थी ना पहले, वाल। वाल भिगो हुआ और पकाया हुआ. अभी हमको हल्दी डालना है. Okay. लेकिन अभी ऑफ सीजन है, तो हम पाउडर ही डाल देंगे. लेकिन पहले जमाने में ताजी हल्दी जाती थी। नेक्स्ट हम इमली का पानी डाल देंगे. काफ़ी है. नमक डालना है. रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट. सो ये जो सांबार है, टेक्निकली इट्स ओके टू से कि ये दाल नहीं, एक करी है। करी है ज़रूर. क्या? यस. मैंने ये भी सुना है कि जो सांबार है, पहली दफा मराठा किचन में बना, जो एक राजा थे, राजा सांबा, उनके नाम से ये बहुत पॉपुलर हुआ, या फिर उन्हीं की किचन से निकला। इज दैट ट्रू? In Sangam era, we were together as Tamilagam. ओके। And for us, the kings were ruling us. At one stage, all of it together there was Chera and Chola Pandya. And then there was a downfall of Chola, the Pandyas came up. Then after Pandyas, the Chalukyas came up. Then the Nayakas. While the Nayakas there was a downfall, the Tanjavur Marathas came in. ओके। And their history is only 500 years ओके। in Tamil Nadu. ओके। My theory of this whole thing is the Marathas and the Samba could be that they had a ambad. Ambad means? Ambad, that is the sorrel leaf. Ambad. Okay. Ambad. Yeah. Okay, and they had the ambad was going with the moong dal, and they were adding little kokum to it also. When they came from the coastal region and they went to Tanjavur, Tanjavur became a delta. Right. They could not get kokum. Okay. They would have replaced it with tamarind. Tamarind. And when you're replacing tamarind, moong cannot take the harshness of tamarind. So, tur would have got replaced and samba got evolved. And the name also from Sambaji could have come. Possible. Possibly. That's an interesting piece of history. But we were not deprived of something we were already cooking. I like the way you defend कि this is my curry. Yes. Good, that's the spirit. Boil आ गया। अभी इसको डाल सकते हैं आप. ये सांबर मसाला सारा? Yes, yes. क्योंकि बहुत thick होता है. अच्छा, ये thick बनता है? Not the बनता है. पतला सांबर No. that I'm used to Yes. back in Delhi. Even today, we make this during our harvest festival, Pongal. इसके अंदर अच्छा बॉईल आ गया है और अब इसका तड़का तैयार तड़का. करेंगे। इसमें अब जाएगा Right. राई। Yes. This again, we are just guessing because the ingredients were available. We are thinking this is how it would have got completed. Completed. Or kadi patta. That's it. Yes. Okay.
थोड़ा सा सांभर लेके The mother style. So you've become a typical Kumbakonam Iyer today. Okay, go slow. Kumbakonam Kumbakonam Iyer is what I am. Yes, today. Okay, what does that mean? We are specialists in sambar. I'm a Kumbakonam Iyer. Iyer. Okay, I like that tag. Like आज के ज़माने में कहते हैं I'm a foodie. Yes, It'll take me a while to get yes, used to that new word. yeah. Because you've become an expert in making this sambar without shallots. और ये काफी थिक है, इसको Yes. पतला करना है. नहीं, वो कंसिस्टेंसी इसी तरह होना चाहिए. So हमारा सांभर तैयार है. तैयार. Time to eat. Yes, जरूर. Wow, the सांभर मसाला क्या मस्त फ्लेवर आ रहा है उसका है. Tell me something. ये जो पर्ल अनियन है, ये कब सांभर में डालना शुरू हुआ होगा? It's very recent. As I told you, sambar is only for the elite. And they were the people who were not eating the onion, garlic, and garam masala. And subsequently, when everyone started making sambar, that's when the shallots got into sambar. Yummy. Yes, Good job. yes. It is really interesting that sambar was first cooked with moong dal. I can understand that the ingredients could have been added, but the fact that different base could change the derivatives of sambar was an eye-opener. But by what I had tasted today, मैंने कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया. ये बिल्कुल आज के सांबार की तरह ही टेस्ट कर रहा था.